Good morning and greetings to all viewers across the world. This is Alok Srivastav bringing to you the live coverage of India's Polar Satellite Launch Vehicle's 40th flight designated as PSLV C-38 from the Mission Control Center MCC of Satish Dhawan Space Center SDSC Shar, MC to Sriharikota, CD pen the control, only real-time programs spaceport of loaded. India. CDP Today, Roger. PSLV C-38 will be launched at 9:29 a.m. Indian Standard Time from the first launch pad of SDSC Shore. This will be the 17th flight of PSLV in XL configuration, that is the high end of PSLV. Let's have a quick look at the payload liftoff mass for PSLV C-38. 712 kg heavy Cartosat 2 series satellite for Earth observation and 30 co-passenger satellites together weighing about 243 kg sums to be 955 kg at liftoff will be injected into 505 kilometer polar sun synchronous orbit. आप देख पा रहे हैं झुरमुटों के पीछे पीएसएलवी का एक विहंगम दृश्य P1 Pulsar on. और बिल्कुल तैयार जाने के लिए. The co-passengers are 29 nanosatellites from 14 countries, namely Austria, Belgium, Chile, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Slovakia, United Kingdom, and United States of America, as well as 1 nanosatellites from India. The 29 international customers' nanosatellites are being launched as part of the commercial arrangements between Antrix P2 Corporation Limited, a Government of India P2 company Pulsar under on. Department of Space, and the international customers. The 28 hours countdown for the PSLV C-38 mission commenced on 22nd June at 5:29 in the morning. The countdown got initiated following the clearance given by the Mission Readiness Review. What you are observing, the closer view of the Mission Control Center, the Director Dekneji from ISU, Dr. M. Annadurai from ISRO Satellite Center, Bangalore, Dr. Tapan Mishra from Space Application Center, Ahmedabad, Dr. Shivan Director from VSSC, Dr. Kunni Krishnan, Shah Director and ISRO Chairman, Department of Space Secretary, Shri A.S. Kiran Kumar, sir. These are the views from the internal side of the Mission Control Center. So I was mentioning the countdown which has already begun P3 Pulsar on. yesterday at 5:29 in the morning, P3 and that Pulsar has on. been only got the clearance from Mission Readiness Review Board as well as the Launch Authorization Boards. These are the two boards which clear the launch. The authorization for launch has been given after reviewing the readiness of vehicles, satellite, ground stations, and other range support systems. On the first day of the countdown, the propellant filling of the fourth stage of the rocket got completed, and very recently the second stage of the rocket has also been filled up. कैसे होता है इन प्रमोचन यानों का निर्माण और कैसे उपग्रह को यान के साथ जोड़कर प्रक्षेपण स्थल तक पहुंचाया जाता है. उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान के अलग अलग निर्माण के पश्चात उनका आपस में समाकलन एक जटिल प्रक्रिया होती है. अब जो लघु फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी समाकलन को दर्शाता है. प्रक्षेपण की ये मुहिम कोर आधारित श्राव के संचालन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है. यान समाकलन से शुरू होकर अब तक संपन्न हुई विभिन्न गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी संजय हुई है नई लघु फिल्म. Dear viewers, just have a look to this view in very interesting a short documentary on the vehicle integration for you. Here is the video capsule for you. Yes. So this is the video documentary of the vehicle integration activity of a PSLV C-38. PSLV is a 4-stage vehicle using solid and liquid stages alternatively. The first solid stage with 138.2 tons of propellant loading comprises of 5 segments. What you just now saw is the first segment is core base shroud, which is getting loaded at launch pedestal, and subsequently various segments get stacked at launch pad to make S139 core stage, followed by the igniter assembly placed centrally in the S139 core. So this is how all the 5 stacks are completed. 20 meter long and 2.8 meter diameter ये होता है जो strap-ons हैं
उनमें जो भरा हुआ जो प्रोपेलेंट है वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये इस पे आधारित ठोस ईंधन भरा हुआ होता है। और इस तरह के एक एक स्ट्रैपॉन्स को लगभग 6 स्ट्रैपॉन्स होंगे इसमें, जिन्हें हम जो कोर स्टेज है उसके चारों तरफ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। 12 मीटर लंबे और 1 मीटर व्यास वाले स्ट्रैपॉन मोटर में 12.2 टन HTPB आधारित ठोस ईंधन भरा होगा, जिससे हम करीब करीब 719 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्राप्त कर सकेंगे। दिस second stage is the liquid stage based Vikas engine developed by Liquid Propulsion System Center. It uses 42 tons of earth storable propellant known as unsymmetrical dimethyl hydrogen and 25% hydrogen hydrate UH25 and nitrogen tetroxide N2O4. और इस तरीके से जोड़ने के बाद में पूरा समूचा जो यान है वो एक तरह से संयोजित होकर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो उपग्रह है उसे एक तरह से क्लीन रूम में हम एडॉप्टर पे लगाने के बाद में परीक्षित कर लिया जाता है सभी तरीके से। और उसके परीक्षण के बाद में इस पूरी यूनिट को, चौथे चरण को, हम रॉकेट के अंतिम चरण तक जोड़ने के बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं स्पेस पेलोड फेयरिंग, या इसे ऊष्मीय सुरक्षा कवच का नाम दिया जाता है, इस तरीके से बंद कर दिया जाता है और जो पूरे का पूरा रॉकेट है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आप जो देख पा रहे हैं जो मोबाइल सर्विस टावर था जहां पे व्हीकल को असेंबल किया गया था वो खिसकता है। एक्चुअली अगर हम दोनों प्रक्षेपण स्थलों की बात करें तो यहाँ पे जो प्रक्षेपण स्थल है वो वही रहता है और जो टावर, जो असेंबली बिल्डिंग थी वो हटाई जाती है। तो इस तरीके से रॉकेट जो है वो बिल्कुल तैयार, संयोजित और प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार। प्रक्षेपण क्षमता 1750 किलोग्राम निहित भार को 600 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकारी कक्षा ध्रुवीय कक्षा में, या 1425 किलोग्राम भार वाले निहित भार वाले को 284 गुणा 21,000 किलोमीटर की GTO कक्षा में प्रक्षेपण करने की क्षमता है। इस समय हम लॉन्च से करीब 21 मिनट की दूरी पर हैं। If you look at the weather at launch site, it has been very clear. Just look at the screen. Very bare minimum wind is blowing very comfortably. The important factor which comes to weather is the one related to the wind speeds. That's what we are showing you to on the screen. This wind is blowing, but these parameters should be known to us rather on ground as well as in ascent phase during the flight. So, and of course any lightning activities that may prevail whenever there is any overcast shadowing. आप बहुत ही क्लोजली देख पा रहे हैं मिशन कंट्रोल सेंटर के श्री जय कुमार जी को। आज ये शार के और LPSC के विभिन्न सीनियर वैज्ञानिक जो लगातार आंकड़ों पर नजर बनाए हुए। So in fact the ground speed is very benign. The upper altitude winds are also quite favorable, which means not much change from the earlier measurement. At launch site, weather monitoring is part of the launch campaign, and it becomes very intense when it reaches to the launch. Communication sir, Chairman Dr. Shivan, Dr. Tapan Mishra, Dr. Aman Nadurai, सभी बेसब्री से प्रक्षेपण की प्रतीक्षा करते हुए इस समय हम लोग करीब 19 मिनट 35 सेकंड की दूरी पे लॉन्च से, और बहुत ही जल्दी लॉन्च के मिशन डायरेक्टर जो हैं वो क्लियरेंस देंगे, एक तरह से अथराइज करेंगे, अधिकृत करेंगे, ताकि बाकी की गतिविधियां को हम सुचारू रूप से चला सकें। दोस्तों, परिवर्तन ही ऐसी चीज है जो स्थायी है, जो नहीं बदलती है। अब आप देख सकते हैं कार्टोसैट 2E से रिलेटेड वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे इस लॉन्च का हिस्सा है। यहाँ पे मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर आप देख पा रहे होंगे वैज्ञानिक सचिव जी को, लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम ऑफिस के जो निदेशक हैं उनको देख पा रहे थे। परिवर्तन न हो तो विकास की दिशा देना और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रक्षेपण के इस पायदान पर हम एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। जी हाँ,
यूं तो चुनौती के आसमान में इसरो ने हर बार सफलता के नए सितारे टांके हैं, पर ये PSLV C-38 जिस नई इबारत को गढ़ने वाला है वो बिल्कुल अनूठा है, विशिष्ट है। भारत लगातार कार्टोग्राफिक उपयोगों के लिए प्रक्षेपण के अनवरत नए आयाम तलाश करता रहा है और इस बार कार्टोसैट 2 सीरीज के 5वें उपग्रह को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारियां कर चुका है। कार्टोसैट 2E के बारे में जानने से पहले मैं आज आपको अतीत की परतों में छुप गए बीते समय के उन 5 उपग्रहों को भी याद दिलाना चाहूंगा जिनके अभिकल्पना की परिणत है ये नया उपग्रह। श्री जय कुमार जी जो आज के मिशन डायरेक्टर हैं और यही इस मिशन को अधिकृत करेंगे, अथराइज करेंगे ताकि आगे की गतिविधियों को हम ले जा सकेंगे। अभी बिल्कुल 2 मिनट में इस घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जो शुरू होगी। मुझे 5 मई 2000 का वो दिन 2005 का वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है जब PSLV C6 से हैमसेट के साथ कार्टोसैट श्रृंखला के 1560 किलोग्राम भारी पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इस समूचे उपग्रह की विश्व की कार्टोग्राफिक जरूरतों जैसे त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मानचित्रीय उपयोगों हेतु उपयोग किया गया था। उसमें लगे कैमरे का विभेदन या रिजोल्यूशन 2.5 मीटर था और इस समय हम बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मिशन डायरेक्टर की वॉइस। इस समय हम अथराइजेशन की प्रतीक्षा पे, क्योंकि इस अथराइजेशन के बाद ही आगे की गतिविधियां जो हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी। हम बहुत ही नज़दीक, ये आप बहुत ही क्लोजर व्यू देख पा रहे हैं। श्री जय कुमार जी मिशन डायरेक्टर, जिनके आवाज़ में आप अथराइजेशन का अनाउंसमेंट सुनेंगे। Stand by for the time mark. Mark when 16 minutes and counting. Timing to control, timing in external hold mode. Roger. Satellite Director Cartosat 2 series to Mission Director PSLV C-38 Cartosat 2S. Cartosat 2E satellite is ready for launch. Mission Director Roger. Range Operations Director to Mission Director. Range systems are ready for PSLV C-38 Cartosat 2 series mission. Mission Director Roger. ETC Network Director to Mission Director. ETC Network is ready for real-time launch support of PSLV C-38 Cartosat 2 series. Over. Mission Director Roger. एक एक करके व्हीकल सिस्टम्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, रेंज एंड ग्राउंड स्टेशन सभी की रेडीनेस को एक्सेप्ट करते हुए मिशन डायरेक्टर श्री जय कुमार जी। और अब वो घड़ी जब मिशन को अथराइज कर दिया जाएगा आगे की गतिविधियां के लिए T0-15 मिनट्स पे। Mark when 15 minutes and counting. आप This is Mission Director. Readiness of PSLV C-38 vehicle. All the 31 satellites on board. Range systems and the TTC systems is confirmed. Clearance from Mission Readiness Review Committee and the launch authorization board is obtained. Based on this, Mission Director hereby authorizes launch operation sequence for launch of PSLV C-38 Cartosat 2E mission at 9:29 hours today. और उन्होंने अथराइज कर दिया T0-15 minutes पे मिशन डायरेक्टर, he has given the authorization to proceed with the launch. He is a range director, range operation director. So the authorization is based on the readiness of the vehicle system, satellite range and ground station. So let all of us listen the announcement in due course for further announcement from the vehicle director Time mark. at T-13. Mark when 14 minutes and counting. So T-13 पे व्हीकल डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जो है उसका इनिशिएशन हो सके। ALC Roger. Though ALS is cleared, but actual launch sequence gets engaged only at T-12 minutes. So once we go through the ALS, there will be a sequence of operations with the vehicle through its onboard system
Using that, it will be checking out the performance and various health parameters, so there is no manual intervention. So we are just 15 seconds away from the vehicle director authorization for ALS. These are the closer view of MCC internal view. V.V. Srinivasan, 30 minutes. the director from कार्टोसैट 2E की एक वीडियो क्लिपिंग जो हम आपको दिखाने वाले हैं, देश की आवश्यकताओं और ज़रूरतों से जुड़े होते हैं उपग्रह के उपयोग और फिर उनके निर्माण प्रयोजन से उनका जुड़ाव, ऐसी ही कुछ जानकारियां संजोई हमारे पास उपलब्ध उपग्रह के निर्माण पर आधारित डेको द्वारा निर्मित एक छोटी सी लघु फिल्म. वी विल ब्रिंग टू यू अ शॉर्ट documentary on the Cartosat 2 series of spacecraft. Here is the documentary for you. India's tryst with space technology began in 1970s with the launch of sounding rockets and the famous SITE experiment when television entered the home of common man through a satellite. Again, during 1970, ISRO successfully carried out a path-breaking experiment for detecting coconut root wilt disease in Kerala using color infrared aerial photography from a helicopter. This triggered the idea of carrying out such observations from a satellite, and thus the Indian Remote Sensing Satellite Program was conceived. Since then, various user segments like agriculturists, forestry, town developers, agencies managing disasters, meteorologists, and many others projected more and more needs. ISRO was thus driven by the user needs to develop the program further. The first operational Indian remote sensing satellite, IRS-1A, was launched in March 1988. This was followed by IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, OceanSat-1 and OceanSat-2, Saral, Cartosat, RISAT, and many more. All of these satellites are placed in a low Earth orbit and they move with respect to Earth in a periodic way. Over the years, launch vehicle technology has also evolved in steps, and a number of vehicles like SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 1, Mark 2, and recently the success of GSLV Mark 3 with 4-ton lift capacity to GEO has placed our country on high pedestal among the Committee of Nations. PSLV is the proven workhorse launch vehicle of India. It has launched 46 Indian and 180 foreign satellites in a span of 23 years. It is also the first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stages. The design of PSLV is highly adaptable and its configuration is possible to be changed as per requirement. PSLV was instrumental in several landmark missions of ISRO, which include Chandrayaan-1, Mars Orbiter mission, and the recent Indian Regional Navigation Satellite System, NAVIC. The performance and adaptability of the PSLV has been improving with every succeeding mission. PSLV C2 launched 3 satellites, C11 launched 10 satellites, C34 placed 20 satellites in multiple orbits, and of course, the momentous PSLV C37 mission, which launched 104 satellites in one go. For utilizing its capacity to the maximum, the PSLV C38 mission will launch 2 Indian satellites, namely a Cartosat 2 series satellite. This satellite will be placed into a 505 kilometer
sun-synchronous polar orbit. It will also carry an Indian student satellite, NIU-SAT, of Nurul Islam University, weighing about 15 kilograms. The mission will also carry 29 foreign satellites from various countries. There are 10 satellites from United States of America, 3 each from United Kingdom, Italy, and Belgium, 1 each from Japan, France, Germany, Finland, Chile, Austria, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, and Latvia. The Cartosite satellite is the 6th and the latest in a series of advanced Indian remote sensing satellites built by ISRO, mainly intended to augment remote sensing data services to the users. It is a 3-axis stabilized satellite and is configured with an objective of providing images in panchromatic and multispectral bands. The spacecraft carries a panchromatic camera, a 4-band multispectral camera, and 2 event monitoring cameras. The main frame of the satellite consists of power system, data handling system, telemetry and telecommand system, on-board control unit, attitude and orbit control system, and the mechanical systems like spacecraft structural elements and thermal system. The satellite structure also contains the mechanisms for solar array deployment and dual gimbal antenna mechanism. Solar panels of the spacecraft generate about 986 watt power, which is supported by lithium-ion batteries. The imageries from the spacecraft will be used for cartographic applications, urban and rural applications, coastal land use and regulation, utility management like road networks, water distribution, creation of land use maps, change detection to bring out geographical and man-made features, and various other LIS and GIS applications. This Cartosat satellite is expected to provide remote sensing services to our country for around 5 years. It is all set to soar into space aboard PSLV C-38 from Satish Dhawan Space Center, Shar, and score yet another victory for ISRO's most dependable, the Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV. इस समय हम प्रक्षेपण से करीब 4 मिनट 40 सेकंड की दूरी पर, जहां तक मौसम के मिजाज की बात है, पूरी तरह से प्रक्षेपण के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। बदलते मौसमों में बादलों की अटखेलियां कोई नई बात नहीं है, और वो भी समुद्र तटों के इतने नज़दीक। सुबह से आसमान में कुछ छुटपुट बादलों का धुंधलका इधर उधर जरूर था, पर सूर्योदय होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। दूर PSLV रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल, समुद्र के किनारे बसा ये प्रक्षेपण स्थल आर्द्रता की अधिकता से जूझता रहता है। अलसुबह की ताजगी वैज्ञानिकों के चेहरे पर आप बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। हृदय में विश्वास और विज्ञान की इतनी यकीनी है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज का चढ़ता हुआ सूरज संपूर्ण भारतवर्ष के नौवहन प्रबंधन को साथ, क्योंकि नाविक का उपग्रह किया जा रहा है टाइम स्टैंपिंग के लिए, एक आशातीत पैगाम देकर जाएगा। हमने प्रक्षेपण मुहिम के साथ ही लगातार मौसम और हवा की गति पर नजर रखी, और आज जमीन पर हवा की गति भी बिल्कुल सामान्य, वैसे लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है।
वायुमंडल में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर आज सुबह मापी गई वायुगत द्वारा कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार पुनः विकल्पित किया जाता है ताकि आरोहण के दौरान वायुगत की घर्षण भार को अल्पतम किया जा सके। और इस समय तक सभी अपेक्षाएं नियत सीमाओं के अंदर हैं। ये अंदर का दृश्य, विभिन्न केंद्रों के निदेशक, इसरो के चेयरमैन और वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक जो साथ में आंकड़ों का अध्ययन करते हुए। मैं आपसे कार्टोसैट 2E के बारे में बात कर रहा था। पहला कार्टोसैट 1560 किलोग्राम भारी था। फिर बारी आई इसके अगले संस्करण 690 किलोग्राम भारी कार्टोसैट 2A की, जिसे 28 अप्रैल 2008 को PSLV C9 से 635 किलोमीटर की 97.94 डिग्री पर झुकी कक्षा में स्थापित किया गया। यह एक परिष्कृत एवं मजबूत सुदूर संवेदी उपग्रह था जो दृश्य विशिष्ट स्थल प्रतिबिंब प्रदान करता है। इस उपग्रह में एक सार्ववर्णिक कैमरा पैन और एक इसका रेजोल्यूशन जो था वो 1 मीटर था। इस समय हम करीब 2 मिनट 10 सेकंड की दूरी पर। इसका स्वाथ जो था इनसेट 2A कार्टोसैट 2A का वो 9.6 किलोमीटर था। इस उपग्रह के चित्रों का उपयोग मानचित्र संबंधी अनुप्रयोगों जैसे कि नगरीय एवं ग्रामीण मानचित्रण, मूलभूत अवसंरचना विकास तथा प्रबंधन और साथ ही साथ भौगोलिक भूमि एवं सूचना प्रणाली एवं LIS या GIS में किया जाता है। कार्टोसैट 2B को 12 जुलाई 2010 को C15 से 630 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कार्टोसैट 2C को 22 जून 2016 को PSLV C34 से और कार्टोसैट 2D को 15 जुलाई 2017 को PSLV C33 से 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। इस समय हम 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर, बहुत ही नजदीक प्रक्षेपण के, सारी गतियां अबाध रूप से जारी, बिल्कुल सतर्क निगाहें इस PSLV C38 पर जो कुछ ही क्षणों में हमसे दूर चला जाएगा। All stations stand by for the time mark. Mark means 1 minute and counting. All Minus subs, 55 seconds. all subs are armed. Minus 50 seconds. All sequencers are armed. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. PS2 VHPP opened. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPPs are opened. धड़कनों को रोकने वाली Minus 20 घड़ियां। seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4. Lift off normal. Before tracking. First stage performance normal. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य PSLV C38 का, Air let stop point ignited. ये वो रोरिंग साउंड गर्जना हमसे दूर जाते यान Plus 35 seconds. लगातार हमसे दूर जाता PSLV 38 अंतरिक्ष के गहन अंधकार को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण और अनंत आकाश की नीरवता में अटूट सन्नाटे को अपनी गर्जना से भरता हुआ Plus 50 seconds. लक्ष्य की ओर अग्रसर, जैसे समूचे विश्व की मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत एक ही संदेश सुनाना चाहता हो कि सफलता के आसमान असीमित हैं। जरा इसकी उड़ान देखिए और इसकी गतिविधियां और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता। Ground lit strap-on separated. स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं P2 और change route to बिल्कुल अपने R2 in main auto. अनुमानित पथ पर आगे बढ़ता हुआ, चेहरे पे हंसी की एक छोटी सी मुस्कान के रूप में आपके सामने Plus 1 minute 30 seconds. बिल्कुल
उसी गति से गतिमान PSLV Airlift strap-on separated. इस समय जो स्ट्रैप-ऑन्स ग्राउंड पे लिट हुए थे, जो एयर में लिट हुए थे, वो सेपरेट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, PS1 First stage separated. Second प्रथम stage चरण engine भी started. विलगित हो चुका है यान से और द्वितीय चरण Plus 2 minutes. 108.9 सेकंड के बाद में प्रज्वलित होते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ। Second stage performance normal. जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी है। इस समय 140 सेकंड क्रॉस करते हुए हम 2.15 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमसे इस प्रक्षेपण स्थल से लगभग 130 किलोमीटर दूर जा चुका है यान और 119 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मिशन डायरेक्टर श्री जय कुमार Heat जी। shield separated. जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है ये, जो ऊष्मीय सुरक्षा कवच है, Second जो stage पेलोड performance फेयरिंग है, normal. हीट शील्ड, वो भी सेपरेट हो चुकी है 157.4 सेकंड पे। और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है वो PS2 के सेपरेशन की है, द्वितीय स्टेज के विलगन की है। ये द्वितीय चरण जो है वो करीब करीब 159 सेकंड से stage 261 performance सेकंड तक प्रज्वलन काल है उसका। और इस समय लगातार जो अनुमानित पथ है और अवलोकित पथ है एक दूसरे को फॉलो करते हुए। The next important event is second stage separation, which will take place in another few seconds. Performance of the vehicle you are seeing on the screen in terms of the graphs. That Second is stage time performance versus normal. altitude and time versus the relative velocity. What right now you saw is time versus relative velocity. Ground trace of PSLV is also shown, varying with time. Red curves the pre-flight condition, while the green one is telemetry data being received from the upper stage of the rocket or the observed one. Other parameters which you can closely watch is azimuth and elevation, which are very, very important. So here you are seeing range versus altitude on left side and ground trace on the right side. Second So you stage can just performance see normal. that it's very closely following the pre-estimated pre-flight conditions. It's very, very close. And now we are very, very close to the third stage ignition after PS2 gets separated. Second stage engine shut off. सेकंड स्टेज Third के stage इग्निशन को ignited. बंद कर दिया गया और तृतीय जो स्टेज है वो प्रज्वलित हो चुकी है। दोनों चरण सामान्य निष्पादन के साथ यान से अलग हो चुके हैं और Third stage performance normal. थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस इज नॉर्मल सो फार। Second stage got separated nominally, followed by ignition of third stage. We'll have this third stage for almost 490 seconds before the fourth stage is ignited, where is duration of coasting is close to 116.44 seconds. Maybe shortly we can hear the announcement of PS3 burnout. Plus 5 minutes. Third stage performance normal. लगभग 5 मिनट समय व्यतीत कर चुके हैं और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है। On ground, along with the solid core stage, 4 solid strap-ons also gets ignited. This followed by the ignition of the remaining 2 strap-on boosters as 25 seconds into the flight. The first stage take the vehicle to a height of 68.2 kilometers and imparts on velocity of 2.16 kilometers. The separation of the first stage takes place at 110 second. Velocity share of first Third stage is stage performance normal. पोंगिनान जी, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, जिनका अनाउंसमेंट आपने सुना परफॉर्मेंस नॉर्मल के लिए। The first stage is performing injecting around 25% of the velocity. During the second stage, flight separation of payload fairing takes place when the vehicle has reached an altitude of 121.683 kilometers. At this time, the velocity was around 22.5 kilometers per second. The second stage takes the velocity to an altitude of 225 kilometers. We are 6 minutes away after T0. Third stage performance The velocity normal. at PS2 separation is 4 kilometers per second. Range operation director, and this is closer view of the vehicle performance. Third stage action completed. The third stage action completed is Coasting phase commenced. burnout over, and now coasting phase has initiated.
Actually, the coasting phase is balancing the energy, the potential energy and kinetic energy. If you look at the graph, if you look at the graph, time versus the relative velocity, because engine is shut off, so no imparting the velocity. So what goes is really vehicle will be simply climbing up, but the velocity will be coming down. Vehicle coasting phase performance normal. So the coasting phase is normal. ये वो निशक्ति काल होता है जहाँ पे 7 minutes. निष्पादन अभी तक नॉर्मल है. इस समय जो तृतीय चरण है उसके इंजन को दहन को बंद कर दिया जाता है और चौथा चरण उसका जो प्रज्वलन है वो अभी शुरू नहीं किया गया है. The PS2 separation at that time the velocity was 4 km per second और इस समय तक 53% of the total velocity दे दिया जाता है. Coasting is very normal. एक उद्घोषणा. Coasting phase performance normal. जी हाँ, पुनः एक बार उसी की उद्घोषणा कि जो परफॉर्मेंस वो नॉर्मल कोस्टिंग फेज का और थोड़ी ही देर में फोर्थ स्टेज का इग्निशन प्रारंभ किया जाएगा. The velocity at third stage separation will be close to 5.9 km per second. Even after the stage burnout, the separation is delayed by almost 220 seconds to ensure that there is no residual thrust from the motor. Plus We 8 can see minutes. the time versus velocity. We are 8 minutes into the flight. Chairman, Center Director, VSSC and Center Third Director stage separated. Shah. Third stage is separated. And now fourth stage will get ignited in a couple of Fourth seconds. stage engine started. Yes, fourth stage engine also got ignited and now we are almost 8 minutes 30 seconds in the flight. तो चतुर्थ चरण प्रज्वलित हो चुका है और हम अब अंतिम चरण के प्रज्वलन की सामान्य निष्पादन की Fourth stage performance normal. घोषणा सुनेंगे और सुनी आपने. इसके साथ ही हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सामान्य निष्पादन की प्रदर्शन करते हुए करीब करीब 9 मिनट का समय फ्लाइट का व्यतीत हो चुका है. इस चतुर्थ चरण में जो लिक्विड स्टेज है उसमें करीब करीब 2.5 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है. Fourth stage performance normal. 44.4 मीटर ऊंचे 320 टन भारी रॉकेट का ये 40वीं फ्लाइट है जिसे PSLV 38 का नाम दिया गया, जिसमें कुल 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं. ये MCC के अंदर का दृश्य जहां पे विभिन्न स्क्रीन्स पे अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं. In fact, we require very high orbit inclination of 97.44 degree for Cartosat, so the satellite will be maneuvering to get this desired inclination. In fact, Plus 10 if minutes. you just look at it, various co-passengers to prefer the same inclination, Fourth stage so there is no performance big issue normal. in injecting these many satellites into the same orbit. Range Operation Director just now announced the performance of fourth stage to be normal. Shri Ponginanji. Now, the duration of the fourth stage is roughly 457.8 seconds, and we have already 10 minutes 33 seconds in the flight, and we are 491 kilometer altitude and 2,375 kilometers away from the launch pad. The performance is very satisfactory. All the customers will be watching this mission very closely because Plus 11 minutes. from various Fourth countries stage performance normal. the performance is normal. I will just Sharon request LOS. our camera team to show the foreign delegates because they are very eagerly waiting for this performance to be very satisfactory and normal so that they can be injected into the final orbit what they desire. अभीक्षित कक्षा की ऊंचाई
इंक्लेशन, ये सभी जरूरी होते हैं जब एक अभियान सफल माना जाता है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि इसमें 29 उपग्रह जो हैं हमारे विदेशी उपभोक्ताओं के हैं और एक जो उपग्रह है वो हमारे भारतीय विश्वविद्यालय का है, नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी न्यूसैट। बाकी जो 29 उपग्रह हैं वो विदेशी उपभोक्ताओं के हैं। चौथे चरण का परफॉर्मेंस 12 मिनट तक बिल्कुल सामान्य। देखिए हमारे कैमरामैन अगर फोकस करते हैं विदेशी उपभोक्ताओं पर, जिनकी सांसें भी बिल्कुल इस प्रक्षेपण पर टिकी हुई। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम कैमरामैन को देते हैं। ये विदेशी उपभोक्ता बड़े बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए, और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये यान पे लगा हुआ कैमरा है जो लगातार उसके अलग अलग पृथक्करण के घटनाएं उनकी फोटोग्राफ लेगा। ये दूसरे देशों के जो उपभोक्ता हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सभी बेसब्री से जो कुछ ही घड़ी में पूरा होने वाला है चतुर्थ चरण का प्रज्वलन, उसकी प्रतीक्षा करते हुए one of the aspect of launch clearance procedure is a space object proximity analysis, wherein analysis is done, we assess the collision risk between the already existing space object vis-a-vis the upper stage of the launch vehicle and the Cartosat 2E satellite once it reaches the orbit. Such potential collisions during the mission is avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. Space object proximity analysis is carried out as a standard practice for all launches from Sriharikota. There is no such concern for this mission. That's 14 minutes. This is very closer view of various senior center directors. Performance is normal, as Range Operation Director has just now announced, and we are very closer. We are close to 3,730 kilometers away from the launch pad, as you are observing in the screen, and we are following exactly the pre-estimated flight path. The observed flight is exactly the same, and we are very close to the fourth stage completion, ignition completion, which will take place shortly. Yes, we have climbed up to 510 kilometers, and any moment now the separation will be announced. We are waiting for that. 893.5 seconds have already elapsed in the flight. 15 minutes. 15 minutes the time. Relative velocity which we got is 7.4 kilometer per second, and altitude 510 kilometer. Fourth stage performance normal. अभी तक सामान्य निष्पादन चतुर्थ चरण का, और इस चौथे चरण के प्रज्वलन के बाद कुछ ही क्षणों में कार्टोसैट 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा में बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीक, करीब करीब 935 सेकंड बीत चुके हैं और 7 दशमलव करीब 586 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेगमान प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हम कितनी नज़दीकी आंकड़े प्राप्त कर चुके हैं। इंक्लेशन ऑर्बिट का 97.43 डिग्री। फोर्थ स्टेज इंजन शट ऑफ, और चौथा चरण का जो इंजन है वो बंद कर दिया गया है। सारे आंकड़े, अभीष्ट आंकड़े प्राप्त किए जा चुके हैं। ऊंचाई एपोजी और पेरिजी के बीच में बहुत ही नज़दीक ऑलमोस्ट सेम 506.8 किलोमीटर की। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इंक्लेशन 97.44 डिग्री, और अब किसी भी क्षण हम बहुत ही
नज़दीक हैं जब कार्टर 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा, वो करीब करीब 40 सेकंड के बाद कट ऑफ इंजन के, और अब किसी भी क्षण इसकी उद्घोषणा आप सुन सकते हैं. वेरी शॉर्टली we'll be seeing the Carter 2E separation. Cartosat separated. 1000 क्षणों के बाद ये घड़ी आई जब कार्टर 2E को यान से अलग कर दिया गया, और कुछ ही क्षणों में न्यू सैट जो भी भारतीय विद्युत वो भी सेपरेट हो चुका है 10 सेकंड के बाद, और अगले 10 क्षणों में CE सैट separated. वो भी अलग हो गया. इसके बाद कुछ उपग्रह जो हैं, कुल 7 उपग्रह आप मॉरिशस से उनकी विजिबिलिटी बनी रहेगी, और ये जो आप देख रहे हैं ये यान में लगे हुए कैमरे से प्राप्त सेपरेशन के कुछ क्षण हैं जो बड़ा महसूस करते हैं जैसे आप यान में बैठे हों और आप स्टेपांस और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज को यान से अलग होते हुए देख पा रहे हों. ये वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं यान की सेल्फी है, जैसे हमारे सैक के डायरेक्टर ने एक बार उद्घोषणा की थी कि यान में लगा हुआ कैमरा अपनी सेल्फी लेता रहता है, तो ये वो सेल्फी थी जो यान में लगे हुए कैमरे ने भेजी. और आप देख पा रहे हैं कि उतनी ऊंचाई से जब वो अलग होते हैं तो कैसा दृश्य होता है, कैसे क्षण होते हैं, कैसा हम पहले केवल अनुमान लगा सकते थे, लेकिन अब हम स्क्रीन पे बाकायदा देख सकते हैं कि उस ऊंचाई से अलग हुए जो स्टेजेस हैं, चरण हैं, वो कैसे दिखाई पड़ते होते हैं. इनफैक्ट जो CSAT 1 के बाद वाले उपग्रह हैं उनकी विजिबिलिटी मॉरिशस से बनी रहती है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं TY सेपरेशन भी हो चुका है. उसके बाद DSAT 1 का सेपरेशन हुआ 1098.9. CSAT 6 वो भी 1103 सेकंड में अलग हो चुका है. और अगला सीक्वेंसर ऑन कर दिया गया है, और QP 5.4 सेपरेशन होने के बाद सेपरेशन होते रहेंगे, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग ऑन बोर्ड होगी जो आपको लगभग 5 से 10 मिनट के बाद ट्रॉल से हम जब डाउनलोड करेंगे डेटा दिखा पाएंगे. तो QP 5.4 भी अलग हो चुका है. इसके बाद के सेपरेशन, इसके बाद के जो पृथक्करण है शेष after about 7 minutes from now. Over to Mr. Director. जी हाँ, जैसा कि अभी रेंज ऑपरेशन बता रहे थे कि 7 मिनट के बाद ये सेपरेशन हम दिखा पाएंगे यान अपने पथ पर अग्रसर. चेयरमैन इसरो मिशन डायरेक्टर को बधाई देते हुए, शिवन सर, कुन्नी कृष्णन सर, जय कुमार जी को बधाई देते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वी नारायणन क्रायोजेनिक के डायरेक्टर और विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर एम अनादुरई, सदन राव, कार्टोसैट 2A के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको बधाई देते हुए LVPO के डायरेक्टर जिन्हें आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कानून गो जी, दीक्षण जी और वैज्ञानिक सचिव Now we just put the Cartosat 2 series and MCC 30 other satellites into orbit. Now I request Director VSSC to say a few words on this occasion. Making history is way of life in ISRO. For the last 50 days, starting from May 5th, this is the 50th day, we have launched 3 major missions of PSLV, GSLV, Mark III, of launching a variety of satellites. Communication satellite, the SAT, then CATO and other 29 satellites, everything has happened within a short span of 50 days. And all this has happened mainly because the hard work given by the team spread over the entire ISRO. This mission, PSLV mission, is not a regular routine mission. We have some innovation in this mission. After the satellite separation, the PS4 is going to be active for 10 more orbits. It is going to provide a very good and a very cost-effective platform for carrying out very costly experiments. And this mission is going to fly. We have already flown with 2 such experiments that will get results. And many such type of wonders are going to be there. And at this juncture, let me congratulate and compliment
the entire ISRO team for the wonderful work. Thank you. Good morning to all of you. The 40th launch of PSLV has very clearly demonstrated once again its commendable position as one of the most reliable launch vehicles in the world. With this launch, we have completed 61 launch vehicle missions from the spaceport of India, Sriharikota. The first half calendar of ISRO has been completed successfully with 4 significant missions, as Dr. Shivan has told, with a variety of launch vehicles, PSLV, GSLV and GSLV Mark III. And it has clearly demonstrated our capability to organize the campaign in a more professional way, utilizing the entire launch complex facilities and deploying all the facilities in a very efficient way. So we have started this year's launch from PSLV C-37 with 104 satellites in the month of February, followed by the South Asian satellite launch in GSLV F-09, and of course the first developmental flight of GSLV Mark III in the month of June, and again in the same month, yet another major mission, PSLV C-38 with Cartosat 2E and 30 other satellites. I would like to congratulate the whole team here because it's a collective effort. As always, we used to discuss the ISRO culture. The launch support, the customer service provided to all our valued external customers from 14 different nations was very effective and very excellent. And at this point of time, I take this opportunity to specially congratulate and compliment the Cartosat team, both the spacecraft and payload teams, for realizing 3 satellites in the same series, Cartosat 2C, 2D and 2E, in a very short span of time. And finally, I would like to take this opportunity again to congratulate each and every member of our ISRO and all other establishments who have been toiling, who have been contributing very significantly towards the successful accomplishment of this important mission for ISRO, and we are making our nation proud again and again. Thank you. Good morning. Today we had the 40th PSLV mission, and all the last 39 missions have been continuously successful, and we carried 31 satellites today, apart from our own satellite of Cartosat 2 series satellite, then one university satellite, Indian University satellite, then 29 customer satellites from 14 foreign nations have been carried, and the confirmation of 7 satellites have been confirmed, and remaining satellites will be getting in a very short while from now. And one important, the unique feature of this mission is we will be demonstrating the 3rd time restart of the PSLV upper stage, the PS4. We have earlier one mission we could launch satellites into 2 different circular orbits by restarting the PS4 twice. Today we will be demonstrating the 3rd time restart also. With that, I am sure we will be able to pull together satellites and launch into multiple orbits as required by the satellite team. Certainly it will give a lot of commercial importance to the PSLV, and this is, as it was pointed, it was a major, this June 2017 is a very historical, going to be a very historical month for ISRO, because 2 major launch vehicle missions has been completely accomplished successfully, and that too within a span of just 18 days. That's really going to be a record. And this launch, now all these missions, we are using PSLV for the last few missions. We could do many different types of missions, launching 104 satellites in the last year, C-37 mission, and launching satellites into multiple orbits, in 2 orbits, and so many missions. It is very clearly beyond doubt, it's established, PSLV can take up any mission
and any number of satellites it can carry to its full capacity, we can fill and carry it. And all this could be possible with the the excellent contribution of our industry counterparts and our own senior consultants who are with us to guide us and give advice and resolve our technical issues when we are in trouble, and the team spirit of Team ISRO. Let me take this opportunity to compliment and acknowledge the contributions and express my gratitude to all of you. And let me take this opportunity also to wish good luck to the satellite team for the early commissioning of all the satellites. Now you can see all the 31 satellites separation has been confirmed, and it's very excellent mission. Very exciting after the last. Thank you. All 31 satellite separations confirmed. Respected Chairman, all our seniors who have guided us all throughout all these missions, and my dear colleagues from all the ISRO centers, we have really achieved a great mission, and I feel extremely privileged and proud to be part of these ISRO missions which have taken our nation to greater heights. Launching two important missions in a span of just 20 days is yet another feather in the cap. I congratulate and compliment all my ISRO colleagues who have taken huge efforts to achieve this kind of mission in very short time. And also I congratulate the industry and the academia contributors. This mission, as you see, is having the main satellite Cartosat 2E in a series of Cartosat, and also one university satellite and another 29 satellites from different countries. This only shows that our PSLV launcher is accepted worldwide as the most reliable launcher. Of course, though we have launched only 4 satellites in first half of this year, as our chairman used to say, we are yet to test our limit of performance. So we will be reaching 8 or 10 launches per year very soon. Thanks are due to all our family members, friends, as well as well-wishers who have been continuously tracking our developments and keep motivating us. PSLV अब सफलता का दूसरा नाम बन गया है। अपनी 39वीं लगातार सफल उड़ान के द्वारा PSLV ने कार्टोसैट श्रृंखला उपग्रह तथा 14 अन्य देशों के कुल मिलाकर 31 उपग्रह अपने कक्षा में स्थापित किए हैं। इसमें सभी प्रणालियों का और खास करके जड़त्वीय प्रणालियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। इस अवसर पर मैं अपने सभी सहयोगियों को तथा राष्ट्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके हमारे परिवारजन और मित्र जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं। हर एक सफल उड़ान के बाद हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए हम सदैव प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। Very good morning to one and all. As PSLV has once again done its job, and the satellites team is initiated next level of innings. Basically, the satellites were released in time, and initial signals are fairly good. The 2 panels have deployed from the Carto 2 CS point of view, and this is a 242nd successful deployment. That means a second century, double century successfully going on, and subsequently, I think on 3 days from now, I think we will be able to enable the payloads to come on and the initial pictures to come. This marks, if you recall, June 22nd of last year, we had the first of this series, second Carto 2S we launched, and within the 1 year, 3 satellites have come in the line, and things are going fairly good. In the meantime,
Another 3 more other observation satellites also launched, CATSat-1, INSAT 3DR, INSAT 2A, and 3 more communication satellites also gone into the name of GSAT-18, GSAT-9 and GSAT-19, and 1 more satellite is waiting for to be launched for just 5 days from now in French Guiana. That means satellite team is able to feed for PSLV, GSLV Mark II, GSLV Mark III, and Ariane also in the span of last 1 year. From Carto 2 years of last June 22nd, 3rd of last year to today, I think 10 satellites have been, major satellites have been rolled out from the ISRO Satellite Center, along with the couple of student satellites, as well as 2 nano satellites. And towards that, I think satellites, one side is getting shrinked to make more and more numbers and more cost effective. And while doing this, more and more satellites are getting into orbit. I think operation team is taking over. Today, this will be the 20th satellite is supposed to handle 24/7. That is, when doing like that, satellite team is taking the note of that and trying to bring in as many autonomy as possible. As you look at here, presently, without any command, ground command, satellite is doing its operation, deploying the panel, trying to orient for south and pointing, bringing its own acquisition mode. Many things are happening there. This is happening. While doing, another aspect also taken, while student satellites were hand holding to make them for overall capacity building, bringing the university together also. For example, today NISAT is being launched, and we are trying to see to that other universities across India as well as across the world, whether they can handhold them to look at the satellite signal, trying to bring in some sort of networking among the student community so that the satellite teams that we are making, the satellite for the upcoming generation, whether they can get along globally. I think that's also we are trying to do that. While this, basically when you look at here, this is one of the greatest team effort. One side launch vehicle is putting very agile launch vehicles, and the satellites also trying to get in good number. The people also trying to make it the satellites more compact, smart. Very many things are happening there. It's a really a team effort with a great relay race with the chairman enabled it. One side we are trying to get the payloads very compact. Different satellites getting different payloads are getting there, and systems also getting more and more compact. And when we are coming over here, SHAR also gives fairly good, I think almost, if you look at here, some team or other almost share over here working for some satellite or other. So it is a greatest relay effort, and handing over the satellites, for example, last season 19 when it launched, it was the 25th satellite, not launched, it's 25 satellites to be controlled simultaneously 24/7 by MCF. Similarly, the operation team of ISTRAC will be handling today's satellite, will be 20th satellite. Like that, satellites are getting accumulated also. That way, from conception to operating the satellites for the next 7 years or 10 years, also the activities are going on. It's the greatest team effort within the ISRO centers, as well as good number of industries. Again, additionally, even the institutions also coming into line, making a great team effort within India. Thank you very much. किरण सर, इसरो के चेयरमैन और इसरो के सभी केंद्र की निर्देशकों और सभी कर्मचारियों ने, भाइयों बहनों और आपका परिजनों, आप लोग को सबको बधाई। ये और सैक की कर्मचारियों को भी मेरे को अलग से बधाई। क्या ये श्रृंखला का तीसरा सैटेलाइट हम 1 साल पे बनाया, पेलोड बनाया, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें भले बाहर से लगता होगा एक ही चीज़ 3 बार बनी, बट हर एक बार में कोई ना कोई नई चीज़ हमने इसमें जोड़ी। इस बार जो चीज़ नई है, ये तो भारत पे बना, उसका सिलेंडर CMS से बना है, और इसमें जो मिरर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी डिजिटली प्रिंटेड है। ये नई टेक्निक है, और मेरे विश्वास है कि बाकी 2 सैटेलाइट की तरह ये श्रृंखला का ये तृतीय सैटेलाइट भी ऐसी अच्छे परफॉर्मेंस देगी और ये भारत को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। और मेरे और भी खुशी है जो PSLV में हमारा दिया नाभिक रिसीवर अच्छी तरह काम किया। सिवन साहब ने उसका डेटा दिखाया मेरे को। ये
ये हमारा 5वां कामयाबी है। इस 5 लॉन्चर पे अभी तक हमने नाभिक रिसीवर भेजे हैं। इसमें रिकॉर्डर कैमरा भी काम किया होगा बराबर, ये मेरे विश्वास है। और आखिर पे आप लोग को पुनर्बार आपको बधाई, और सबसे बधाई का पात्र है आपका परिवार परिजन ने, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी तरह आपका पीछे रहते हैं। धन्यवाद। The workers of ISRO, the PSLV has once again made ISRO team and the entire Indians proud by successfully launching the 40 satellites, including the Cartosat 2E, in the right orbit. This historical mission has taken place just after 18 days after the last launch of the GSLV Mark III D1 and GSAT 19 mission. This is another important milestone achieved by the ISRO and ISRO team. And ISRO today stands as a role model for the entire nation. Today, as you know, all the vehicle systems, including the liquid propulsion systems, have performed extremely well. One of the important experiments what we are going to accomplish is the restart of the 4th stage liquid engine after 9 orbits. The accomplishment of this mission in a very shortest possible time is really possible only because of the meticulous planning and the execution carried out by the entire ISRO team, and the realization of the subsystems and the vehicle in total with a high level of maturity and reliability. And excellent system engineering approach and meticulous review process which is adopted by ISRO has really yielded this good result. And as you know, it is only because of the systematic and sincere hard work of each and every ISRO person which has made this success. Let me congratulate and compliment the entire ISRO team for this excellent job done. On behalf of the Director of LPSC, Mr. Somnath, let me also congratulate the entire team ISRO for this accomplishment. In the area of liquid propulsion system, as you know, after the historic success what has taken place in the GSLV Mark III launch, we have accelerated the development activity of the 200-ton liquid oxygen and liquid kerosene semi-cryogenic engine. Development is totally accelerated. For improving the payload of the Mark II and Mark III vehicle, we have also taken up the job of increasing the thrust level of Pegasus engine, CUS engine, as well as C-20 cryogenic engine. On this occasion, I can, on behalf of the Liquid Propulsion System Center, I can assure the ISRO management the entire activities, whatever defined to us, will be accomplished in the record time to take ISRO greater heights and make each and every Indian more proud in the coming years. Thank you very much. Good morning. At the outset, I compliment PSLV team for the precise injection of Cartosat 2E satellite into the target orbit. The inclination whatever has been achieved, the one whatever we are looking for. Currently, the solar panels of the satellite have deployed. Satellite has started generating power. We have started receiving signal at the ground station. Like our previous two satellites, this also has got multiple cameras to provide images in panchromatic and multispectral bands. It has multiple modes of operation where we will be able to get large area coverage, long strip area coverage, and many spot area coverages. The main goal of this mission was to augment the data services to the user. I hope that the satellite will enhance the application area and provide the needed data to the users. With this new companion into the Cartosat 2 family in the orbit, the average revisit of this in an area has come down to less than 2 days. And one of the major accomplishments of Cartosat 2 series is we have realized 3 satellites in a short span of 12 months. I wish that the satellite will largely enhance the application areas and will satisfy the needs of the user community. At this moment, I sincerely express my thanks to respected Chairman ISRO for the constant guidance, Director, ISRO Satellite Center, and all of the center directors
for their support in releasing 3 satellites. Also, my thanks to the entire project team for their hard work and their family members for their constant support. I thank each and everyone. Jai Hind. As already pointed out, this particular mission has been successful and it has put all the satellites into orbit. And just to update you on the GSAT 19, which we launched a few weeks back, now the satellite has reached its designated location and all the payloads have been switched on and it has started performing. And this is a new capability which is added, multi-beam high throughput satellite, the first version. And very soon we are going to have another communication satellite on 28th of this month, which will add significant number of transponders to our capacity. And our effort of continuing to provide increased Earth observation, navigation as well as communication will continue, and we have many more activities to be performed in the coming days. Thank you very much.